मैं बुलाना चाहूँगा मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में सबसे पहले स्टेज पर एक ऐसी महिला को जिनके बारे में उनसे ही सुने तो बेहतर हैं। शी स्टार्टेड अ बिजनेस मैनी ईयर्स अगो। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे, तो मैं बुलाऊंगा स्टेज पर श्रीमती मीनाक्षी सिक्ची, रेनबो फाइनेंशियल सर्विसेज, अमरावती से। ज़रूर अमरावती के पानी में कुछ खास बात है, वहाँ ऐसे IFA पनपते हैं कि देखना ही बनता है। तो मीनाक्षी जी बताएंगे कि किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई, क्या सर्कमस्टांसेस थे और क्या क्या आपको झेलना पड़ा, क्यों सोचा आपने कि आप IFA बनेंगी? मेरा जो ये स्टार्ट करने का था, मेरे हस्बैंड ही पास्ड अवे इन 2006, तो उस समय उन्होंने इसकी नींव ही रखी थी और अनफॉर्चुनेट उनका डिमाइस होने के बाद में ऑन अ सेंटिमेंटल नोट मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड करने का सोचा, क्योंकि मैं उस समय उनके साथ जुड़ी हुई थी उस काम में। पर धीरे धीरे बादल छटते गए और एक नया प्रकाश दिखते गया। ऐसा लगा कि इसमें एक कोई मिशन है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का मिशन फॉर ऑल करके, क्योंकि मुझे समझ में आया कि क्या मायने रहते हैं। कोई भी इस टाइप का मिसहैप किसी परिवार में होता है तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रोल निभाता है। I have been very lucky because I belong to a very well off family and I have blessed people with me, जो मुझे मतलब आशीर्वाद है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा कि दूसरे लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर कि मीनाक्षी जी का पोर्टफोलियो है, करीब 100 करोड़ का AUM है और करीब 1.3 करोड़ का उनकी SIP बुक है। इतने सारे इन्वेस्टर्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं। और एक ख़ास बात है इनके बारे में सुनने में आता है कि जब भी इनके बारे में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि ये जो हैं ये फाइनेंशियल कुंडली निकालती हैं। कहाँ से शुरू हुई बात फाइनेंशियल कुंडली की? कुंडली की बात ऐसे शुरू हुई कि मैं हमेशा समझती हूँ हमारे पास कुछ भी अच्छा बुरा होता है, इंडिया में एक चीज़ है, पहले कुंडली बताते हैं क्या होगा, फिर उसका ग्रहों का निवारण होता है, अंगूठी बनवाएंगे, पुखराज बनाएंगे, मोती बनाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, सबसे जुड़ी हुई चीज़ है। तो उसे लेके गोल्स भी एक तरह से हमारी एक फाइनेंशियल कुंडली का हिस्सा है, जहाँ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाउसेज़ हैं, जो गोल्स हैं वो हाउसेज़ हैं, और उसका निवारण कैसे किया जाए। तो उस दृष्टिकोण से ये आर्थिक कुंडली उसको हमने किया और हमने एक प्रोग्राम किया था जो हमने नहीं बल्कि हमारे इन्वेस्टर्स ने ही उसको प्रमोट किया था, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस कर चुके थे, कुछ उनके जो इन्वेस्टमेंट्स थे, उनके जो रिटर्न्स थे और उन्होंने कैसे उसको पाया, उन्होंने प्रमोट किया। और वो प्रोग्राम आशीष पिंपले सर थे वहाँ स्पीकर, और वो प्रोग्राम में वी हैड वॉक-इन्स ऑफ अराउंड 800-900 पीपल। इट वाज नॉट एन इन्विटेशन और एनीथिंग लाइक दैट, इट वाज अ वॉक-इन प्रोग्राम एंड इट वाज अ सुपर सक्सेस अराउंड 8-9 years ago एंड टिल टुडे। इसीलिए वो आर्थिक कुंडली के नाम से ही सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आर्थिक कुंडली सही हो तो आपको और किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और ख़ास बात है कि ये कुंडली से आगे बढ़ के ये जाना जाता है मार्केट में कि मीनाक्षी जी जो हैं ये किसी को भी अपना कस्टमर बना लेती हैं। और किस तरह से वो बात शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें हंसाकर कस्टमर बना, मतलब लोग हंसते हंसते उनके कस्टमर बन जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग अप्रोच। आज सुबह किसी ने बात की थी कि हम दिल से डिसीजन लेते हैं, लेकिन लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन फाइनेंस ऑल्सो, ये मैंने पहली बार सुना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप क्या कहना चाहेंगी हमारे इन्वेस्टर IFA कम्युनिटी को, किस तरह की एक मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग इतना सीरियस होकर बातें करते हैं फाइनेंस। हम किसी के खुशहाल ज़िंदगी के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी प्रगति के लिए प्लान कर रहे हैं। इतना स्ट्रेस्ड होके और इतना टेंशन के माहौल में क्यों करना है? हंसते खेलते भी, लोगों को समझते ही, आते ही भाई ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो। पहले चीज़ों को समझें, उनके साथ एम्पैथाइज़ करें, क्लाइंट्स के साथ समय बिताएं, उनको समझें। मैंने उसमें देखा कि जितना आप ज़्यादा क्लाइंट का कंफर्ट लेवल रहता है, उनके सपने मेरे सपने। और हमें जनरली फैमिली के साथ ही, हस्बैंड वाइफ ये सभी लोग साथ में रहते हैं, तो एक फैमिली सा माहौल रहता है एंड ह्यूमर हमारा एक उसमें का पार्ट ही रहता है। तो एक अच्छे वे में एक डिस्कशन हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म, जैसे लेगेसी के बारे में अमित त्रिवेदी सर ने बताया, तो मैं सिर्फ लेगेसी को मेरे परिवार या मेरी काम की लेगेसी नहीं, मेरे साथ अब मेरे क्लाइंट्स का नेक्स्ट जनरेशन भी मेरे साथ एज क्लाइंट्स है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ लेगेसी फॉर मी कंटिन्यूएशन। थैंक यू वेरी मच
मीनाक्षी जी, आप हमारे साथ जुड़ी। मैं समझता हूँ कि इनसे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा उन लोगों को जो कि जहाँ पहुँचे हैं आज और आगे कैसे जाना है। हंसते खेलते एक बिजनेस भी हो जाता है, फैमिली होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़माने से काफ़ी सीनियर हैं, अकोला से श्री जयकांत दांड। जयकांत जी 1984 से म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं। मतलब 1984 में मैं अपना ग्रेजुएशन फिनिश कर रहा था, तो मतलब आपका पहुंच होना चाहिए। सर, ये बताइए कि आपने इतनी लंबी जर्नी शुरू की है, लेकिन आप जो एक ख़ास काम करते हैं जो बहुत लोग नहीं करते हैं। मैंने डॉक्टरी के बारे में बात किया था पहले शुरू में। जयकांत जी एक ऐसा काम करते हैं डॉक्टरों के साथ जुड़ के कि ये गांव वालों का और गांव में काम करते हैं, उनका भला देखते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल भला हो, ये भी इनकी खासियत है। जरा अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। सर, पहले तो मैं बता दूं, मैं अकोला के नज़दीक यानी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से मलकापुर से हूँ। दूसरी बात कि मैं प्रोफेशन एक्चुअली 1977 में मेरी प्राइवेट पैथोलॉजी लेबोरेटरी जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली थी, तो इसके कारण सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करने के कारण मुझे सभी डॉक्टरों से और मलकापुर और उसके आजू बाजू के 175 विलेजेस में कभी ना कभी ये 20 साल के दौरान जब तक मैंने पैथोलॉजी लेबोरेटरी की, उनके घर में एक्सेस मिल चुका था। और एक्सेप्टेबिलिटी यानी एक आइडेंटिटी, मुझे परिचय देना बहुत कम पड़ता था। उसके बाद में 1981 में मैंने यूटीआई की एजेंसी ली और 1983 में वेस्टर्न इंडिया में से US 64 और MIS का सबसे बिगेस्ट मोबिलाइजर था उस स्मॉल एरिया में से, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन बॉम्बे से भी था मेरा, कुछ क्लाइंट्स। और 1987 में आई बिकेम द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीआई फॉर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त हमारे यूटीआई के हर एक तहसील में यानी इंपॉर्टेंट तहसील में एक बड़े बड़े 20 बाय 10 के होर्डिंग लगते थे बस स्टॉप या प्रोमिनेंट लोकेशन पे, जिसके कारण पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक विजिबिलिटी चले गई। तो इन सब कारणों से एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि लेबोरेटरी के कारण उनके घर तक पहुंचा। और इसके बाद में आजू बाजू के देहात के बहुत सारे एफ्लुएंट लोग जो है, सरपंच हो, वहाँ का किराना दुकानदार हो, डॉक्टर से तो मैं चोली दामन का साथ था, इन्हें बहुत अच्छी तरह जुड़ा रहा। तो ऐसे ही एक बार विलेजेस में जाने के बाद में वहाँ पे हमने सरपंच, किराना दुकानदार और 8-10 लोगों की मीटिंग लगी। तो सरपंच जो थे बहुत सिंसियर वर्कर और थे, वो बोले कि हमारे यहाँ डिफिकेशन अभी भी है, सैनिटेशन नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो मेरा डॉक्टरों से पहले से ही कनेक्ट था, तो मैंने 8 दिन के अंदर ही पहले वहाँ पे एक डॉक्टरों का मेडिकल चेकअप के बहाने कैंप्स रखा, जिसमें फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और डॉक्टरों को ही सैनिटेशन पे एक लेक्चर वगैरह देने लगा, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन का कैसा होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और रूरल हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों से वहाँ कनेक्ट होने के कारण पल्स पोलियो की भी वहाँ पे कैंप्स कराए, जिसमें मुझे लागत कुछ ज़्यादा नहीं देनी पड़ी। भोजन भी बेचारे देहात वाले अरेंज करते थे और इनका करेक्ट होने का उनकी गाड़ी में बैठ के जाता था। खाली मुझे मेरा टाइम स्पेंड करना पड़ा, लेकिन ये करते करते लोगों में एक ये भावना बन गई कि ये हमारा वेल विशर है और हमारे खाली इसके लिए नहीं देखता है। और ऐसे एक बातचीत में मेरे ख्याल में आया कि विलेजेस के अंदर, बहुत सारे विलेजेस के अंदर कि एक जैसी बाटा की स्टोरी है कि आदिवासी में भेज दो तो वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बताया था यहाँ तो पूरा स्कोप ही स्कोप है, कोई चप्पल ही नहीं पहनता है। वैसा मेरा हुआ कि वहाँ कोई म्यूचुअल फंड जानता नहीं था, आ जाके लोग बैंक्स, डिपॉजिट्स, पोस्ट और इंश्योरेंस और कुछ लोग फिर क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह। ये काफ़ी हम्बली बात कर रहे हैं, मैं बता दूं। 100 करोड़ से ज़्यादा इनका AUM है और ये इतने सारे कस्टमर्स हैं इनके, गांव में फैले हुए हैं। और ये खास बात देखिए कि इनका जितना म्यूचुअल फंड का जितना प्रैक्टिस बढ़ी है, ये किस सहारे से बढ़ी है कि इन्होंने लोगों के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा। ये लोगों की रग रग पहचानते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो इसीलिए इनका सक्सेस रहा। इन्होंने डॉक्टरों को भी इसमें लेके आए और हर गांव में जब आप जाएंगे, और ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, क्योंकि हम लोग तो गाँव में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ सिर्फ एक बेसिस पे रिलेशनशिप नहीं होता है, रिलेशनशिप इज़ होलिस्टिक। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ये होलिस्टिक रिलेशनशिप हमको प्रेरित करता है कि जैसे हम आगे बढ़ें। म्यूचुअल फंड का कमीशन कम हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन अगर कस्टमर का बेनिफिट, किसी भी तरह से बेनिफिट हमारे दिमाग में होगा, तो इसी के लिए
He is the one who epitomizes that, for which I want you to give him a big round of applause. Thank you. So thank you very much. Thank you. Yeah. तीसरे व्यक्ति जिनको मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर, ये हैं इंडिया के उस पार्ट से जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था 1983 में जहाँ इन्होंने काम शुरू किया कि यहाँ पे कोई सेविंग्स भी करता होगा. और मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर श्री हरि कामत को, गोवा से. यानी आप सोचते हैं कि गोवा में लोग एक्टिवली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते होंगे. 1983 में इन्होंने काम शुरू किया. मैं आपसे बता दूं सर, 1983 में मैं गोवा में था, लेकिन मैं वहाँ अपना हनीमून मना रहा था. और आप थे पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेचते थे, म्यूचुअल फंड का भी काम इन्होंने तब से शुरू किया था. थोड़ी सी इस जर्नी के बारे में बताएं कि गोवा जैसी जगह में जहाँ लोगों का आज तक भी मतलब बहुत आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, वहाँ आपने कैसे ये बिज़नेस शुरू किया? To begin with, I have to tell you that I have entered this profession not by choice, but by accident. See, the thing is, when I passed out 10th and I wanted to take some profession, I decided to become a chartered accountant and join commerce stream. When I reached 12th and first year BCom, see, the problem was that all my friends were spending money during interval and all on pocket money, and I was not having any money to spend. So I first took an agency of post office for this monthly income, this RD, and where I used to collect around 2,000 rupees per month, and I used to get some 60 to 80 rupees, which I was happily using for my college spending. So this has attracted me for working and making money. So later on I took PPF in 1978. So there also I started working, I gathered customers. So my attention was diverted towards this money making, small things, and I neglected my studies. Today I feel that was a good thing because I could not qualify to become a chartered accountant. I just completed my education as a BCom graduate, and I started working for a hotel, which is Hotel Siddharthi Goa. I worked there for just 13 months. In hotel industry, the problem is entry there is a time, exit there is no time. I used to go around 8 o'clock, sometime 12 o'clock I used to reach back home, sometime 11 o'clock. So I decided that when I can work for somebody for 12 to 14 hours, why should I not work for myself? So immediately after graduation, I left that job and I came into this industry from 1983. Initial my agency was unit trust. I used to sell a lot of unit 64, MIS. Then there is one scheme called DIUS, Yes. Deferred Income Unit Scheme. And for every this type of schemes, there was no trail. We used to get upfront only. And I used to collect more than 50 lakhs for every scheme. So that gave me some attraction towards this particular industry. And then 83 also, in 1983 itself, I set my office, which was very small. And I started doing this in a professional way. So, Chartered Accountants, Institute of Chartered Accountants loss is the gain for mutual fund industry. ये हमारा lesson है आपसे. एक बात बता दूं, Mr. Kamath manages more than 575 crores AUM. So आप लोग जरा निकलेंगे तो पूछ लीजिएगा कुछ tips. He has made more करोड़पतिस than Amitabh Bachchan in कौन बनेगा करोड़पति. ये कैसे किया आपने? See, today I have got my more than 150 clients who are worth more than 1 crore. So how I did, because I am in this profession for a long term, I believe that my clients should also remain invested for a long term. So I was always after them that you invest, you save, and the one of the thing what I rightly did, that's what I realized now, was asset allocation and asset relocation. Relocation means in Goa, most of the people, they have got good amount of FDs. Because in Goa, most of the people are FD minded. They are not equity based. They don't want to take any risk. So I try to convert that money, bring that money into mutual fund. So since my office is centrally located in Panjim, very well placed,
people come to see me. And my first job is to make their pocket empty. Whatever way, if I come to know, if I happen to see their passbook and some 20 lakhs is there, I'll come out with some proposals and try to bring that money into debt, liquid. See, today I have been selling not only equity. My asset allocation, my 575 crores are spread over debt, liquid, MIP, balance, and even sector fund. Second, very important thing, what I do is my portfolio is always on my PC. I show it to them, the returns, and just to show to my client, I have invested in every category. All my investment, of course, they are in the name of my wife. Today, wife is the richest person because I cannot invest in my name. So the thing is, I display that portfolio to my client. One more thing, the moment I come to know that my client is around 70, 75, 80 lakhs worth, I try to promote him, when are you going to become a crorepati? So this is the way, recently, last year I tried that. And within 2-3 months, those people who were nearing 80, 90 lakhs, they immediately brought and gave me the money and they were crorepati. So fantastic asset allocation works, long-term works, motivating the clients. Or one more very important thing that you do that you've not spoken about is that he is available to his clients 24/7. It is said that even if somebody calls him at 2 a.m. in the morning, he will be there to take a call. Is that true? This has happened 1 or 2 times. My client's child had gone to US for this higher education and all. So once upon a time, he calls me around 2 a.m. Sir, I will be requiring some 29 lakhs. Is it possible? Because I am disturbing you at late hours, but I said yes, because before leaving, I had given him the portfolio statement for his visa purpose. Right. So I was knowing that he was having around, his mother and parents were having to gather around 80, 85. I said, you go ahead, I'll arrange it. Fantastic. So as similar, one more time, one more case has happened to me. One of my client was traveling on Europe trip and he had some heart problem and he was admitted in Switzerland. So around 2:33, I got a call. And that's saying that, again, they require money. I attended the call. One last question I have for you. As somebody who's been in this business for probably longest in the room, for the young IFAs who are joining the business now, what is that one piece of advice you want to give? That one thing you want to... See, in our field and in the market, if you have to be successful, you have to remain for a long term. You cannot be a short-term player and make your clients orphan. See, if you make your client orphan by leaving this profession, because many people immediately after graduation, they come, they take this agency, and later on they quit because after taking some job. So this should not be done. Keep in mind clients' interest topmost. Try to avoid sending your clients to the AMC offices. Keep everything, whatever they want, provide them, and be technologically better off, so that recently what I have noticed is a lot of people, my clients are getting notices from income tax and all. So you should be able to handle those by providing necessary statements and everything. Well, thank you so much. आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई. Give him a big applause. Thank you. And the fourth person I'd like to call on stage is Vishrant Suresh from Asset Plus. Vishrant, in contrast to everybody you saw, is the youngest IFA that you will meet. Vishrant actually has set up, along with his partner Avnish, an online advisory platform. I'd like him to speak about this. What are the challenges you face? Talk about customers you've not met, customers from any part of the country or the world, and they want advice. How is it that you thought about this? I must say something very important here. You heard that classic mode in India is a young man becomes an engineer, goes to IIT, becomes an engineer. What does he do next? Usually work in a tech firm, and then he goes abroad. Vishrant went to IIT and he joined the IFA community. So give him an applause, ladies and gentlemen. I want him to speak about what has been his 2-year journey in creating an online business for advice. Please. Yeah,
Thank you for the introduction, Ashutosh. So although I was in an IIT, so like most of my other classmates, I had absolutely no interest in engineering at all. So I was pushed into doing engineering, and so once we got in and we realized that's not what we wanted to do, we started exploring the various other sectors, and that's how I came across finance. So from my second year in college, I have been a derivatives trader. So I'm an option writer by profession for about 6.5 years or so, and I had also completed my CFA. So what we started with is the money that we used to make from taking tuitions and trading options. We started investing it in mutual funds, and thanks to the push from my parents' end, this was about 4.5, 5 years ago. And once we graduated and I joined another startup where I was working with a friend, it became very evident that when we spoke about investments or in specific mutual funds, right, to youngsters, people had a very complicated perspective. So they were like, oh, mutual funds, it probably requires like 1 crore minimum to invest, or it's like a very complicated investment where it markets fluctuation, volatility. The only thing people knew about mutual funds was that they are subject to market risk. And that, please read the offer documents carefully. That's pretty much everything that people knew. So our intent was to provide the platform which not only offers a convenience, because the youngsters of these days are, as someone rightly said, they are used to the Olas and Ubers and Flipkarts, right? So they do not want a drawn out service when it comes to investing. So our intention was to provide a platform that blends convenience along with the support of advisory. So that is how Asset Plus started about 2 years ago. So you should know that they've developed an app, and the brain behind the app is his partner. Of course, I'm sure he provides all the input from the customers. What sort of an app it is, and how do you use it to reach out? How do you actually acquire the customer? You don't know where these people are and which part of the world, how does the app work, who downloads? Just talk to us a little bit about the mechanics of how this works. Okay. So we decided to go predominantly app-based because we wanted to reach out to the tier 2 and tier 3 locations. So one thing that's very surprising is that given how technology has evolved, people have come to a stage where they are more comfortable in, at least the youngsters are comfortable in trying out different opportunities on a mobile phone rather than spending hours and discussing with a planner. Correct? So that is one thing we had observed right in the early stage. So we launched our mobile app somewhere March 2017. We have about 2 lakh users on our app right now. And the marketing was primarily supported by the phenomenal work that Amphi had done with the mutual fund Sahiye campaign. It might be interesting for you guys to note that on a daily basis, 1.2 lakh Indians search for how do I make a mutual fund investment. So that is the level of awareness that has been created in the industry. But this now becomes a supply side problem. So there's so much demand for people who want to know about mutual funds and who want to invest. But there are not enough people to be able to guide and provide them advice. So we bridge the gap. So our marketing predominantly has come via placing ourselves in the right positions in Google as well as Play Store and App Store, so that when people search for best mutual fund investment or best mutual fund apps, we are positioned in the top. So that's predominantly how we get our clients. And in this journey, how did you decide to, where did you find the capital? So this business, fortunately, is a very asset-light model. So the biggest cost comes from building the tech. And since both of us ourselves were from the tech background, we have completely built the tech end-to-end. Okay. So until last month ago, although we had about 6,500 clients and over 15,000 SIPs, we were a 2-member team. So wow. That is what. So did you hear the part right? A lot of the interest, a lot of the customers are coming from tier 2 and tier 3 towns. This is contrary to what we all have been taught to believe, that it is the large cities, the engagement in the online apps, etc. is coming from large cities. Actually, it is coming more from the tier 2 and tier 3, and that you are able to generate, in fact, the leads are being generated for you free because there's a campaign going on. Of course, they have used tools, they've created a fantastic app. So congratulations. Thank you very much for being with us today here. I'm going to invite on stage, if you like, if you give me a minute, all the 4. Please come together, and I'd like all of you in this house to give them a really large, a big hand. Thank you.
Why not? Please, here, you can use this. She has a message to give. Here's a mic. Here's a mic. Everyone in this audience, everyone has a story. Everyone has scaled their way up, some way or the other. सबके पास जोश है, जुनून है, जज्बा है, और उसके साथ जो चाहिए जद्दोजहद, वो भी हम सब कर रहे हैं. सिर्फ ये समझना कि हम दिया है, उससे कुछ नहीं होगा. दिया जब जलता है तभी प्रकाश फैलता है. तो जलना और जद्दोजहद करना एंड टू रीच दैट वन पर्टिकुलर गोल, बुल्स आई, बस दैट्स इट, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. Thank you so much. So thank you so much for being with us, all four of you. Thank you, ladies and gentlemen.